तुमको स्क्रीन शो करछ ना? Yes, sir. Again, sir. Yes, sir. स्क्रीन कॉर्डर रे मु शो करछ ना? Yes, sir. Yes. Welcome, sir. Yes, sir. तो आमे पढ़िबा पिला माने आपनकर फिलोसॉफिकल फाउंडेशन रो गोटे यूनिट 1 गोटे बीट अछि देखिबे इंपोर्टेंट क्वेश्चन मध्य क्वेश्चन टा होची व्हाट इज द रिलेशनशिप बिटवीन फिलोसफी एंड एजुकेशन अछि ना गोटे तम यूनिट 1 ने देखिबे गोटे बीट अछि व्हाट इज द आज्ञा सर अच्छे relationship between philosophy and education. Okay, देखिबा डिस्कशन करिया सो हमर फास्ट डिस्कशन होच पिला माने एक्चुअली देखिया गले आपनकर फिलोसफी और एजुकेशन भितर देयर इज ए वाइड रिलेशनशिप philosophy and education both are interconnected to each other both philosophy and education are interrelated to each other in three ways तीनटा वे interrelated कौन लिखा ला philosophy and education are interrelated philosophy is dependent on education education is dependent on philosophy माने philosophy education ऊपर dependent education भी philosophy ऊपर dependent yes कहा जाए से कहा जाए philosophy and education are the opposite sides of a same coin are the opposite sides same coin गोटे मुद्रार दुई पार्श्व भली yes कौन ता रिलेशनशिप हम देखिबा एति के हम कनेक्टेड जिंस देखले जे फिलोसफी और एजुकेशन आर इंटररिलेटेड फिलोसफी एजुकेशन ऊपर डिपेंडेंट एजुकेशन फिलोसफी ऊपर डिपेंडेंट फुल स्क्रीन ही देखोनी मु हाफ स्क्रीन देखो छी तुमको देखा जाउछ ना लेखाटा तुम मोबाइल टा एमिति धरो ना एमिति धरो ना एमिति नु एमिति धरो बुझ पेला ना मोबाइल टा एमिति धरो मो हाथ देखि परछ मोबाइल टा केन धरिया पे कहूची एमिति एमिति नु अरे बुझ पेला ना मुख था Yes, sir. आज्ञा सर आज्ञा सर मोबाइल सामने पहले देखा जाउछ ना क्लियरली आज्ञा सर आज्ञा सर सर क्लियर देखा जाउची एटा हम एठी जान जे फिलोसफी और एजुकेशन आर इंटररिलेटेड फिलोसफी इज डिपेंडेंट ऑन एजुकेशन एजुकेशन इज डिपेंडेंट ऑन फिलोसफी ने फिलोसफी एजुकेशन ऊपर डिपेंडेंट एजुकेशन भी फिलोसफी ऊपर डिपेंडेंट आ दीटा जाक परस्पर इंटररिलेटेड कहयार अर्थ ए टाइम ठीक होनी क्लास करिया बे देयर इज नो टाइम फॉर क्लास देयर इज नो टाइम फॉर स्टडी यू हैव टू मेक अ टाइम वो बहुत सारा शेड्यूल भीतर टाइम बाहर कर तुम क्लास टा करिया पे आछे सो ट्राई टू अंडरस्टैंड एते कथा पिला मन बुझिले आज्ञा but सर आउट स्टेटमेंट कहा जाए जे फिलोसफी एंड एजुकेशन आर द अपोजिट साइड्स ऑफ द सेम कॉइन मुद्रार दी पर्स भले गोटे हेड एटा गोटे टेल आउट कह जे विदाउट फिलोसफी विदाउट एजुकेशन इज लेम एजुकेशन विदाउट फिलोसफी इज क्रिपल फिलोसफी एजुकेशन बिना बूढ़ा जो छोटा एजुकेशन फिलोसफी बिना बधिर कहया अर्थ से ठीक समझते बुझिले सुनो यस सर आज्ञा सर तेणु फिलोसफी इज इंटर रिलेटेड टू एजुकेशन कहबार अर्थ लिखी पॉइंट लिखी मुझे देख फिलोसफी एंड एजुकेशन आर टू साइड्स of the same coin la education is the dynamic side of the philosophy education is the dynamic side माने philosophy टा जदी स्थिर बा theoretical education टा जी practical philosophy जी रास्ता देखा education से रास्ता रे जाए कथा बुझी परछो ना माने education is practical in nature philosophy is theoretical in nature philosophy is the study of reality the pursuit of wisdom it is not mere theorizing but deals with the resonant nature of things tries to arrive at the certain personal principle so philosophy is a way of life कहि दउछ कोनटा
philosophy is the theory, education is the practice. Theory leads to practice and practice leads to theory. Theory और practice परस्पर सहित इंटररिलेटेड ना. Theory बिना practice असंभव, practice बिना सेटा practice करी कि तो theory तैयारी हुए. Theory apply करे कि तो practical solve हुए. माना नहीं कौन. So philosophy sir. contemplates and education applies. Philosophy रास्ता तैयारी करे, education apply करे. Philosophy is the theory of education. Education is the applied philosophy. Philosophy को real life रे apply जो करा जाए ताको education कहा जाए. सर मने करो भाभी नियंतु आमे हमर गोटे स्कूल टा आमे एठी महात्मा गांधी को फॉलो करू. काको फॉलो करू? महात्मा गांधी को फॉलो करू. महात्मा गांधी को तमे फॉलो करनो. महात्मा गांधी को कहा को फॉलो करछो? तांकर थॉट, तांकर आइडिया को. सुननो महात्मा गांधी को Yes, थॉट sir. और आइडिया को मु कहि परिबो डायरेक्टली इनडायरेक्टली तमे महात्मा गांधी को फिलोसफी को फॉलो करछो. हां महात्मा गांधी जहा जहा कहि दे तमे तमे एजुकेशन रे अप्लाई करछो. तेनपे एजुकेशन टा को कहा जाए एजुकेशन इज द अप्लाइड फिलोसफी. Education is the applied philosophy. So philosophy is bound to have an educative effort and educative effort is bound to be rooted in philosophy. माने philosophy रो education को रास्ता दिखाए. Education philosophy रो ही मूल. Both are interrelated to each other. Both are interrelated to each other and interconnected to each other. Everybody understood this? संतोष कौन Yes, कहबो? संतोष हेलो ना सर किछ नहीं मुझे तो म्यूट कर तुम कहीं अनम्यूट कर दो. म्यूट मु करछि. बुझिला समझते करो. यस Again, sir. हमें आउट स्टेटमेंट पढ़ले जे philosophy is dependent on education. माने philosophy is dependent on education को in the sense that philosophy follows the education. Almost all philosophers propagated their philosophy through education. अच्छा सारा सुनंतु. गांधी जो philosophy देइछंती सॉक्रेटिस जो philosophy देइछंती कि एरिस्टोटल जो philosophy देइछंती कि अरविंद टागोर रविन्द्रनाथ टागोर जो philosophy देइछंती कि प्लाटो जो philosophy देइछंती कि कांटे जो philosophy देइछंती कि जॉन लॉके जो philosophy देइछंती कि जॉन डीवे जो philosophy देइछंती कि जॉन आडम जो philosophy देइछंती कि कम्युनस जो philosophy देइछंती इमन सो philosophy जो देइछंती इमाने कोन पाठ पढ़ना मन मन philosophy दे दिछंती कि हां जेतक फिलोसोफर जहाँ भी से फिलोसफी देइछंती शिक्षा माध्यम रे तो एमानक फिलोसफी आम पाखक पहुंचुची केमिति. हाउ डू यू नो अबाउट जॉन डिवे? हाउ डू यू नो अबाउट जॉन लोके? हाउ डू यू नो अबाउट गांधी? भाया एजुकेशन और नॉट? अरे भाया एजुकेशन और नॉट? Yes, sir. सुन लो किछटा रीजन देछि दे व्हाई फिलोसफी इज डिपेंड ऑन एजुकेशन. एजुकेशन होची मूलदुआ. एजुकेशन मूलदुआ पकाए फिलोसफी तैयारी करिया पे. सर गांधी जहा कही देले गांधी कोन बिना एजुकेशन फिलोसफी छाड़ देले कि क अरिस्टोटल कोन बिना एजुकेशन फिलोसफर हे गेले कि. an educated person can think systematically, can think methodologically, can think randomly, can think rationally, can think logically, can provide philosophy. Yes or no? ये जो लोक मान ना लिखा है all they are not educated. Yes, sir. Educated. आंको फिलोसफी जो एमान जो चिंताधारा देछंती आंको फिलोसफी रो मूल दुआटा तांको एजुकेशन पकैछ ना पकैनी ताले फिलोसफी प्रोवाइड द बेसमेंट. फिलोसफी नियम पकाए मूल दुआ पकाए कहार एजुकेशन. ऑल ऑफ यू एग्रीड? यस और नो? मन नहीं कोंतु. Yes, sir. अच्छा जहा जहा कहि देले सी देश तु देश लोक मानक पाखकु व्यापुची केमिति. गांधी कथा तुम मैंने जानूच के मत कहल तुम सरकम अरिस्टोटल तो ग्रीस रे जाई कहितले. सॉक्रेटिस प्लाटो जो प्लाटो जाई ग्रीक रे कहितले तांको कथा तुम पाखकु आसुची केमिति केमिति आसुची? Sir, book रू पढ़िथिलु. बाय बुक कहबी एजुकेशन द्वारा आसुची. हां
कहि परिबि तो एजुकेशन द्वारा आसुची बोली Yes, sir. ताले एजुकेशन प्रोपागेट द फिलोसफी एजुकेशन ट्रांसमिट द फिलोसफी एजुकेशन ट्रांसफर द फिलोसफी एजुकेशन स्प्रेड द फिलोसफी मन नहीं एजुकेशन फिलोसफी को प्रचार प्रसार करे करे ना नहीं कहि परिबि एजुकेशन ट्रांसमिट द फिलोसफी फ्रॉम वन जनरेशन टू अनदर इट कीप्स फिलोसफी अलाइव फिलोसफी को वंचित रखिछि इट प्रोपागेट्स फिलोसफी अदरवाइज इट विल बी लॉस्ट एजुकेशन द्वारा ही फिलोसफी बंची एजुकेशन माध्यम ए माने सब तुम मान ए जो लोक माने आज भी आम पाखे जीवित अच्छा ना नहीं तांकर थॉट कहा माध्यम ए मानक थॉट आम पाखे जीवित अच्छी कहा माध्यम शिक्षा माध्यम ना ये सुनो Yes, Yes, sir. 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 सर एजुकेशन इज ए फॉर्म गिवर एजुकेशन प्रोवाइड्स द कंक्रीट फॉर्म ऑफ फिलोसफी बाय ट्रांसलेटिंग इनटू एक्शन फिलोसोफर माने जहाँ कहि देले ताकू कामर लगेबा काम कहार गांधी सिना क्राफ्ट एजुकेशन कथा कहि दे गले क्राफ्ट एजुकेशन को इंक्लूड करा गला शिक्षा रे ताले एजुकेशन फिलोसोफर मानकर प्रैक्टिकल कथा गुडा को प्रैक्टिकल ले परिणत करे रियल लाइफ रे अप्लाई करे ना नहीं ताले समस्त ए जो पॉइंट गुडा को मु जहाँ डा डिस्कशन कली बुझी पारले कि Yes, कोंतु Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. everybody clear done yes or no Done, sir. Yes, sir, done. Done, sir. Yes, sir. भाई जो आपण मानक Yes, मु जहाँ sir. पढ़ौची बुझी पारछो ना सत कुह Again, sir. बुझिपारुछि विद्यारण जेते सारा क्लास करछि बुझी पारछो ना विद्यारण पकानी Yes, sir. Again, sir. तर कहला education as an acquaintance by education acquaints philosophy with a new problem education philosophy रो नुआ नुआ समस्या को समाधान करे education as a tester education philosophy को टेस्ट करे in actual working condition माने जॉन डे कहि जाइथिबा कथा को जेतल प्रैक्टिकल लाइफ रे अप्लाई करबी तापर देखिबी हां ए कथाटा जदी ठीक हला माने गांधी जी कहितले शिक्षार मान होची 3H रो डेवलपमेंट आमे देखिले हाँ शिक्षार मान होची हेड हार्ट और हैंड रो डेवलपमेंट जन मनुष्य खाली बुद्धि आले हबनी इमोशन भी दरकार काम भी दरकार हम देखले हाँ ताले ठीक अछि गांधी जी कथा ठीक अछि ताले फिलोसोफर मानकर कथाटा को एजुकेशन टेस्ट करे कि हां एजुकेशन कोन नुआ फिलोसोफर मान को जन्म दउनी नुआ फिलोसफी मान को जन्म दउनी कलाम को फिलोसफी आज का डेट रे ए सुनो आज का डेट रे जेपी कृष्णमूर्ति को फिलोसफी आज का डेट रे सर्वपल्ली राधाकृष्णन को फिलोसफी आज का डेट रे लाल बहादुर शास्त्री को फिलोसफी आज का डेट रे हमर एनसीएफ रो चेयरमैन प्रोफेसर यशपाल को फिलोसफी इन वन फिलोसोफर मान को एजुकेशन जन्म दिनी दिए ना दिन Yes, sir. Yes, sir. सर फिलोसफी दीदी स्थिर अवस्था आणु एजुकेशन टा डायनामिक ना ये सुनो Yes, sir. एजुकेशन रा माने कोन गोल अचीव करिया ना फिलोसोफर मानकर गोल को अचीव करिया रे की सहायता करे एजुकेशन गांधी सिना एटी कथा कहि देले गांधी जी जो 3H रो डेवलपमेंट करिवो कहा ता हेई परिवो केवल शिक्षा माध्यम रे हेई परिवो गांधी सिना कहि देले बेसिक एजुकेशन दिया जाऊ नई तालीम दिया जाऊ नई तालीम बा बेसिक एजुकेशन बा जहा कहे बुनियादी शिक्षा बा मौलिक शिक्षा गांधी सिना कहि दे गले ताको अप्लाई करिवो प्रैक्टिकल लाइफ रे परिणत करिवो गांधी जी को स्वप्न को पूर्ण करिवो कि एजुकेशन ये सुनो एवरीबॉडी अंडरस्टूड हां नहीं Yes, कोन पिला sir. माने डन Yes, sir. डन एजुकेशन एजुकेशन डिपेंड्स ऑन फिलोसफी ना एजुकेशन फिलोसफी रे निर्भरशील यस एजुकेशन इज अनथिंकेबल विदाउट फिलोसफी फिलोसफी बिना एजुकेशन चिंता हम करि परियानी फिलोसफी डिटरमाइंस द रियल डेस्टिनेशन टुवर्ड्स एजुकेशन हैज टू गो सर देखंतु आपण कहि मानकर आइडियलिज्म वाला मानकर आपण कोन नेचुरलिज्म नेचुरलिज्म थॉट म कहूची जे कहते नेचुरल एजुकेशन पर गुरुत्व दिया जाऊ प्राकृतिक शिक्षा पिला को नेचुरल वे रे शिक्षा जाऊ जेमती आपण कहबे विश्व भारती यूनिवर्सिटी बा जोटा कहछ हम शांति निकेतन तयारी करछन कि आरएन टागोर जोटे ओपन एयर एजुकेशन दिया होची हां
फिलोसफी एजुकेशन रो गोल डिसाइड करे, एजुकेशन क्वाड जीवो डिसाइड करे, फिलोसफी थियोरेटिकल साइड। यस और नो? Yes, sir. Yes, sir. तापरे ये जो मैं गत क्लास रे कहिथिल ना, जो मेटाफिजिक्स, एपिस्टेमोलॉजी, एक्सियोलॉजी कहिथिल ना कहनी फिलोसफी रो No, ब्रांच? sir. गत क्लास में ता पूर्व क्लास तो कहिथिबे ना, देखियो Sir, जो first class ହେଇଥିଲା ସେତେବେଳେ ଆପଣ କହିଥିଲେ। कौन First class ରେ କହିଥିଲେ। कहिथिल ना? हां, मेटाफिजिक्स माने स्टडी ऑफ रियलिटी, एपिस्टेमोलॉजी माने स्टडी ऑफ नॉलेज, एक्सियोलॉजी माने स्टडी ऑफ वैल्यू। तर फिलोसफी मेटाफिजिक्स द्वारा हमर एम ऑफ एजुकेशन डिसाइड हुए, एपिस्टेमोलॉजी मेथड डिसाइड करे, एक्सियोलॉजी करिकुलम डिसाइड करे। तर केमिति माने करो आपण पाठ पढौछंती, पाठ पढाटा चाइल्ड सेंट्रिक हबो ना नाही? जदि आपण नॉलेज गेन करिवे, को मेथड रे पढैले पिला मानको ज्ञान ग्रहण करिवा सहज हबो, ये सब डिसाइड करे किए? एपिस्टेमोलॉजी। आमे पढिबा काहे की ये डिसाइड करे किए? मेटाफिजिक्स। आमे पढिबा, जदि पढिबा द्वारा कोन शिखिबा, एक कथा डिसाइड करे किए? एक्सियोलॉजी। आम भितर को वैल्यू डेवलप हो, आम भितर को आमे एटा पढि सरी के एथरा आमे कोन शिखिबा, कोन मोरल वैल्यू डेवलप हो। ताले एगुडा सर एगुडा सब कहार ब्रांच? फिलोसफी ब्रांच। मैंने रास्ता कहा देखुंदी, कहा देखुंदी, क्या एजुकेशन को। Education. तो ग्रेट फिलोसोफर हैव बीन ए ग्रेट एजुकेटर आल्सो। जे भलो से भलो फिलोसोफर से भलो एजुकेटर भी। हां सर, फिलोसफी द्वारा एजुकेशन हमर जो करिकुलम, मेथड, टेक्स्ट बुक, टीचर केमती पढ़ेइबो, स्टूडेंट केमती पढ़िबो, टीचर रोल कौन, स्टूडेंट रोल कौन, शिक्षार लक्ष्य कौन, ये सब किए डिसाइड करे? ये सब किए डिसाइड करे? फिलोसफी डिसाइड करे। बुझिबो ना? और नहीं कुओ सुनो। I guess, yeah. I guess, तो sir. फिलोसफी एम ऑफ एजुकेशन भी डिसाइड करे, करिकुलम भी डिसाइड करे, ला एम ऑफ एजुकेशन डिसाइड करे, टेक्स्ट बुक भी डिसाइड करे, मेथड ऑफ टीचिंग भी डिसाइड करे। हां फिलोसफी टीचर को बनाए, कह जाए जे टीचर इज द किंग पिन ऑफ सोशल फैब्रिक। टीचर होची सामाजिक गठन रो सबटो मेन मेन लोक से। टीचर बहुत इंपोर्टेंट रोल अछि एजुकेशन में। टीचर हु इज वेल अवेयर ऑफ द फिलोसफी, जे फिलोसफी और लाइफ एजुकेशन बाबद टीचर जे जानि ना, से ता जॉब रे सक्सेसफुल हो। माने नहीं को टीचर को कहि टीचर टीचर भीतर अंडरस्टैंडिंग बढ़ू, डायरेक्शन आसू, टीचर पिला को गाइड करू, क्लैरिटी दो, ता भीतर रीजनिंग आसू। बुझ पेला ना? माने नहीं को ताले ओवरऑल देखिया गले फिलोसफी द्वारा शिक्षार एम डिसाइड होची, टेक्स्ट बुक तैयारी होची, करिकुलम बना होची, मेथड ऑफ टीचिंग डिसाइड होची। अरे होची ना नहीं कह? टीचर रो काम कोन हे परिबो, स्टूडेंट रो कोन Yes, काम sir. हे परिबो? ताले आपन कहया कथा फिलोसफी इज स्टैटिक, एजुकेशन इज डायनामिक। माने नहीं कह? फिलोसफी डिपेंड अपन एजुकेशन, एजुकेशन डिपेंड अपन फिलोसफी। बड़ बड़ एजुकेटर माने से माने फिलोसोफर, बड़ बड़ फिलोसोफर माने से माने भी एजुकेटर। फिलोसफी रास्ता देखौची, एजुकेशन से रास्ता रे जाउची। माने नहीं को? I guess, सब sir. तो बुझले? एजुकेशन बिना फिलोसफी असंभव, फिलोसफी बिना एजुकेशन भी असंभव। लेती कथा हम फाइनल स्टेटमेंट बुझले, फिलोसफी एंड एजुकेशन, फील एंड एम इडिशन लिखुची, आर इंटर रिलेटेड टू ईच अदर। माने नहीं को? सुनो, yes or no मार चला खाली। Yes, sir. इंटरडिपेंडेंट टू ईच अदर, Okay. interconnected to each other। माने नहीं को? intertwined to each other, Yes, sir. interwoven to each other, inter interlinked to each other। एग्री? समझ बुझले? Yes, sir. पचारला फिलोसफी एजुकेशन भितर
लेख क्वेश्चन ऐड पड़ो गोटे क्वेश्चन हम कहि दोची लास्ट सब क्लास प्रति क्लास में क्वेश्चन कहूची हां लिखु जान सब आज्ञा डायरेक्ट क्वेश्चन आज्ञा सर व्हाट इज द relationship between सलमान खान वैसे नु फिलोसफी एंड एजुकेशन कौन फिलोसफी एंड एजुकेशन इटा को 15 मार्क पढ़ी पारे 5 मार्क पढ़ी पारे से अनुसार आम आम लेखा कमेया बढ़िया एडजस्ट कर परिया ना कर परियानी को आज्ञा पहले 5 बजे पड़िया 5 बजे पड़िया 5 मार्क पहले 2-3 बजे रही जाओ हम ना कह पारिबा ना इंपोर्टेंट पॉइंट गुड़ा जो मु जो पॉइंट रखल सेटा इंपोर्टेंट लेखा ता भीतर तुम अनुसार चलो सब मन रख आंध्र बेड को जो इंटरओवन पॉइंट अक्षर करिया पई रेकॉर्डिंग लिख दबो कौन कहलु झियो सर जो इंटरओवन पॉइंट जो डाकलेन के इंटर डिफेंस से सब से पॉइंट सब जगह अर्थ से आबा ठीक अछि आपन को आंध्र बेड को थरे करे पास करिया पई सबुठर मो 2-3टा दिन से मन रख कहि तो स्टार्टिंग क्लास रे बोधे कहनी हैंड राइटिंग इंपोर्टेंट पॉइंट ला कौन सी क्वेश्चन छाड़िबा नहीं सब जगह करियो थरे करे सब क्लियर हो पॉइंट मु पॉइंट उडा एतर जो पॉइंट उडा देखि पेला ना देखि पेला कोडा पॉइंट मु कहउली ओए छुआ यस सर आज्ञा देखि सर पेला ना पॉइंट उडा कहउली सर एई पॉइंट उडा ए जो पॉइंट उडा जोरा हाईलाइट कर लिखा है बुझो ना तो लेखा तमर जहा जाउ जो और पॉइंट इंपोर्टेंट सब बुझले एवरीबॉडी आज्ञा क्लियर यस सर भल लागला क्लास समझ बुझले आज्ञा जेतेबेले मते टाइम होउची मते टिके सुजोग दियंतु मु टिके जे व्यस्त बड़ टाइम भीतर टाइम बाहर करछि तेणु व्यस्त हो नहीं मुझे जे दायित्व नहीं सिलेबस तुम जहाँ पढ़ा सारी डोंट वरी आई एम विथ यू चलो तो थैंक यू पिला माने एग्जाम कथा मत पचार एग्जाम कथा बाबद जब किसी इनफॉरमेशन पाइली मु तुमको कहबी ठीक अच्छे ये फिलहाल मो पाखे किसी इनफॉरमेशन ना पाइले कहबी बुझिपार आ गोटे कथा पिला माने मत गोटे छोटिया थरप दे जानिछ पिला माने हम जनरली एटा को कहथली गोटे थरो गोटे चैनल ले रिश्ता बनाना आसान होता है रिश्ता बनाना आसान होता है लेकिन उसे निभाना मुश्किल होता है इट्स वेरी इजी टू क्रिएट रिलेशनशिप बट वेरी डिफिकल्ट टू मेंटेन इट संपर्क बनेबा सहज किंतु संपर्क रखिबा कष्ट संपर्क थोड़े विश्वास भांगी गले ना सरी भी काम करे जो भी आम फैमिली रिलेशनशिप हो लव रिलेशनशिप हो जो भी रिलेशनशिप हो ला ठीक अच्छे विश्वास बहुत इंपोर्टेंट टीचर स्टूडेंट रिलेशनशिप रे भी विश्वास बहुत इंपोर्टेंट इफ यू विल ट्रस्ट मी आई विल पुट माय 100% टुवर्ड्स यू इफ आई विल ट्रस्ट यू ऑन ए स्टूडेंट तमर भी एक्सप्रेशन बा तमर भी सेतिके एफर्ट दरकार तेणु भाभी चिंती की संपर्क रे आगे बढ़े दरकार विश्वास रखा दरकार संपर्क थरे भांगी गले सरी काम दिए थैंक यू गुड नाइट थैंक यू सर थैंक यू सर धन्यवाद सर शुभ थैंक यू सर थैंक यू God सर bless you पिला माने and again I repeat the statement the happiest hour of my week when I'm taking your class tell mara jatra dialogue ko nahi but that's honest fact at what I have realized that I have said thank you all God bless you all नमस्कार देखा पुणी को दिन को समय ठीक टाइम रे से पर्यंत विदाय दियंतु मते रहली जय जगन्नाथ जय जगन्नाथ सर टाटा पिला माने जय जगन्नाथ सर भगवान सब तुम भल रखंतु take care of yourself and take care of your family God bless you all प्रणाम सर सर आपको भी भगवान भलरे रखंतु